Hello students of class 8. Students, already we were doing chapter 1, the Indian Constitution. What was the Indian Constitution? There's a lots of thing that in India has happened. Indian Constitution has given full right to the people that we can select our leader. We can select our लीडर. हम अपना लीडर खुद सेलेक्ट करते हैं. सिर्फ यही नहीं, अगर सबके बिना सहमति का हम कोई कार्य नहीं करते हैं, चाहे वो स्कूल है, स्कूल में अगर हमें मॉनिटर select करना है, if you want to select a monitor, for that also we do the election, because the students agree, then only we select the monitor. So this type of many places are there जहाँ पे, so Indian Constitution is very thing good for the people, and many places are there where people didn't get any rights. बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ लोगों को कोई राइट नहीं मिला है. दे डिडंट गेट एनी राइट. वो अपना लीडर अपने पसंद से नहीं चूज कर सकते, वो अपने लिए कुछ. बट इन इंडिया वी हैव गॉट फुल राइट, नॉट ओनली मेन, इवन वुमन ऑल्सो. सो एवरीबडी हैज गॉट अ फुल राइट. सो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प द प्रोटेक्ट द अगेंस्ट certain decision that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that country believe in. For example, it possible that many people who live in democratic might come to strongly feet, and so many people are living in democratic country. They are fully strong, they know how to fight, they know what we have to do. हमें क्या करना है, हमें किस तरह से कार्य को करना है. हम अगर कोई भी कार्य करने के पहले सब एक दूसरे की भावनाओं को जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही उस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं. दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्री. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. व्हाट आर द की फीचर्स? बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th century, the Indian national movement of the being active in the struggle for the independence. So many, that time people were struggling. In 20th century, people were struggling for our independence. So many people were there who have fought for the independence, who have fought for the country, who have suffered many lots of things for a country. So this was thing. In that only there are one parliamentary form of government. Parliamentary form of government has come. Separation of power is there. Fundamental right is there. All the people has got full right, their own right, fundamental right. So what they want to do, they can be able to do it. They have made a different constitution, different type of law. जितने भी वर्क करने का उनके पास कार्य का वो है, सबका अलग अलग एक विभाग तय किया गया, जहाँ पे सब अपने अपने कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं, सही ढंग से कर सकते हैं. That is and every person has got full right to do their work without any interference of other. बिना किसी के इंटरफेरेंस के वो अपना कार्य अपने तरीके से कर सकते हैं. दे हैव गॉट फुल पावर. उनके पास पूरी तरह से ये अधिकार मिला है कि वो अपने कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, हियर ओनली आई एम स्टॉपिंग दिस टॉपिक ऑफ फंडामेंटल, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल्सो दैट विल बी with the video I'll give you some assignment and question answer as well. We will do it. So our chapter will complete on the next video and next class. Okay students, till then now, thank you. Have a good time. Take care of yourself. Bye. Thank you.